Hello students, welcome to IBPS Guide YouTube channel. Today we will discuss fill in the blanks with appropriate phrase. This is a portion of banking exams and specifically mains question paper of mains, the syllabus of mains. Fill in the blanks means we will get a sentence and in this sentence we will get a gaps, and these gaps have four options and we have to choose the which will be the correct option. We have to choose the option only one options, but this will be the phrase. This will be the phrase means a group of word. That is not the one group, one word, not even two words. It will be the group of words. You can say that it will be the sentence. So we have to locate which will be the correct option of this paragraph. Let's move to question number 1. Direction 1 to 10. In the mentioned questions, a paragraph is given. Fill in the blank with the correct sentence from the options. Means A, B, C, D, E. These all are the sentence. These all are the group of words and phrase. This is sentence also. So we have to locate the correct options, correct sentence. Guys, at first we have to locate one thing. Before started this session, I want to give you some advice. Whenever you do this type of questions, at first you have to locate that the tense of this sentence. If the statement is in present tense, definitely your option will go in present tense. If the statement will be in the future tense, then you can choose the option in future tense. But apart from that, according to meaning, we have to put the phrases, we have to put the sentences. So chalo, let's move to the question number 1. Our first question is, Samsung's competitors such as Huawei and Xiaomi, which are also planning to launch foldable phones soon, dash the ergonomics and functionality of the new devices, something that has not happened in the industry for years. However, it can try to do what Apple had done before it, hanging onto premium prices. Samsung's competitors, Samsung का जो competitors है, such as Huawei and Xiaomi, which are also planning to launch, मतलब Samsung की जो competitors है वो लोग भी plan करना शुरू किया to launch foldable phones. जो Samsung foldable phone लेकर आ रहा है, तो इनकी जो competitors है वो भी कोशिश यही कर रहा है, planning कर रहा है कि जो ये लोग भी foldable phone लेकर आए market में soon. Dash the ergonomics and functionality of the new device. Ergonomics is a very common word, very new word also. Ergonomic means it is a science which dealings with designing and arranging some electronics things. मतलब जो ऐसा एक साइंस जो ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को. सो दिस साइंस इज कॉल्ड इग्रोनॉमिक्स एंड फंक्शनली ऑफ द न्यू डिवाइस. सो जो डिवाइस आएगा वो न्यू डिवाइस आएगा. एंड समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपेंड इन द इंडस्ट्री फॉर ईयर्स. ऐसा कुछ जो पहले इंडस्ट्री में नहीं हुआ. हाउएवर इट कैन ट्राई टू डू व्हाट एप्पल हैड डन बिफोर इट. जो एप्पल पहले किया था, हैंगिंग ऑन टू द प्रीमियम प्राइस, और जिसकी वजह से एप्पल का कुछ प्रीमियम प्राइस भी था. सो सैमसंग्स कंपटीटर्स सच एज द Huawei एंड Xiaomi, which are also planning to launch foldable phones soon, dash the ergonomics and functionality of the new device. तो सैमसंग के जो कॉम्पिटिटर्स है वो प्लान कर रहे हैं कि कोई न्यू फोल्डर इज अ कॉमा एंड द ergonomics and functionality of the new devices. Let's move to the option number 1. Can grip about difficulty of using fold-out novelty one-handed off. Samsung competitors such as Huawei and Xiaomi, which are also planning to launch foldable phones soon, can grip about the difficulty of use the fold-out novelty one-handed off. Just see, foldable phones में अगर difficulty ही आएगा तो ये launch करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये Samsung की competitors है. So that's why we give the options. Which options? That options will be creating the positive information. So the first option, can grip about the difficulty of using the fold out novelty one-handed. Difficulty, that is negative information. So we need here some positive information. So that's why A option will not be correct option.
सेकेंड ऑप्शन पे देखो, विल बी फोर्स्ड टू ड्राइव डाउन प्राइजेस एज द बिगेस्ट प्लेयर ऑल्सो कॉम्पीट ऑन। मतलब क्या है ना, Xiaomi विच आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च फोल्डेबल फोन्स सुन, बहुत जल्दी ही फोल्डेबल फोन्स लॉन्च करने जा रहे हैं, और जिसकी वजह से विल बी फोर्स्ड ड्राइव डाउन द बिगेस्ट प्लेयर्स मीन्स यहीं पे व्हाट डू मीन बाय बिगेस्ट प्लेयर्स, जो बिग जायंट जो है मे बी सैमसंग क्या करेगा ना, अपना प्राइस जो है वो कम करने के लिए मजबूर करेगा। ऑल्सो कॉम्पीट ऑन, इन लोगों के साथ कॉम्पीट करने के लिए जो बिगेस्ट प्लेयर्स जो है वो अपना प्राइस जो है वो डाउन करने की कोशिश नहीं, विल बी फोर्स्ड करेगा ही। थर्ड ऑप्शन पे दिया है, विल हैव मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी देन इट्स राइवल पुट टुगेदर इन, विल लॉन्च टू फोल्डेबल फोन्स। देखो ये ऑप्शन भी, दैट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग, ये ऑप्शन भी इसमें हम दे सकते हैं, जो विल हैव मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी देन इट्स राइवल पुट टुगेदर इन। सो बी ऑप्शन हम ले सकते हैं, सी ऑप्शन भी हम ले सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं इन दोनों में से। एंड डी पे बोला है, मूव इन अ डिस्प्लेस ऑफ एप्पल ऑफ टुडे द enviable market position of capturing, move in to displace the apple of today. Here guys, one thing I hope it is clear to you, here एप्पल के साथ इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं हो रहा है, कंपटीशन की बात इसमें हो रहा है क्या, सैमसंग के साथ वाई एंड Xiaomi के कंपटीशन है। सो दैट्स वाई एप्पल को डिस्प्लेस करना, एप्पल को एनविएबल मार्केट पोजीशन से हटाना, ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हमें तो नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई डी ऑप्शंस विल नॉट द करेक्ट ऑप्शन। E would love a shorter natural replacement cycle of, which is absolutely irrelevant with this statement. So that's mean E option is also wrong option. So now we have to take either B or C. So B option will be forced to drive down the prices as the biggest player also compete on. C option will have more production capacity than its rival put together in. So which can be the correct option? तो Samsung's competitors जो which are also planning to launch foldable phones, तो पहले तो foldable phones definitely that is a premium price में एप्पल बेचता था, उसके बाद ये सैमसंग लेकर आया, सैमसंग के साथ साथ इनकी जो कंपटीटर्स है वो जब ये आना शुरू कर देगा तो दैट्स मीन प्रीमियम प्राइस, एप्पल जो प्राइस में बेच रहा था उससे कम प्राइस में सैमसंग बेचा। इसके बाद जो हुआई एंड Xiaomi दोनों जो जब प्लानिंग कर लिया जो टू लॉन्च फोल्डेबल फोन्स आने वाले हैं, सो दैट्स मीन इसकी वजह से क्या होगा, सैमसंग का जो प्राइस है वो और भी कम होगा, बिकॉज दे ट्राई टू ऑन कॉम्पीट ऑन, इनको कंपटीशन पे रहना पड़ेगा। तो कंपटीशन पे रहने के लिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रहने के लिए सैमसंग को डेफिनेटली क्या करना है ना, फोर्स डाउन टू द ड्राइव डाउन प्राइजेस, तो विल बी फोर्स्ड टू ड्राइव डाउन प्राइजेस एज द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑल्सो कम्पीट ऑन। सो दैट्स वाई देखो इट इज क्लियर, आंसर हमारा होगा क्या, बी। Guys, one thing you have to understand this statement, you have to understand the options also. एकदम ही इसमें बहुत ही hurried, don't take it in hurried manner and don't take it in a hurried decision. पढ़ के समझ के तभी इसके ऑप्शंस देना है, otherwise you will be wrong and negative marking will be continuous. So be very very careful. Understanding ability बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए ये क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। चलो let's move to question number 2. Whenever promoter reach an agreement with lenders, should not investors get to know what the new terms of agreement between the group and the mutual funds are since dash and a changed scenario? Whenever promoter groups reach an agreement with lenders, जब भी promoter groups reach करते हैं, agreement करते हैं किसके साथ, with lenders के साथ, should not investors get to know, investors को should not investors get to know what the new terms of agreement between the group and the mutual funds are. इन लोगों को पता नहीं चलता है जो टर्म्स, न्यू टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन, क्या न्यू टर्म्स हुआ है बिटवीन द ग्रुप एंड द म्यूचुअल फंड्स आर सिंस डैश अंडर चेंज्ड सिनेरियो। तो क्यों नहीं पता चलता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जो बिटवीन ग्रुप एंड द म्यूचुअल फंड्स आर सिंस डैश अंडर चेंज्ड सिनेरियो, what is the reason, what can be the reason? So first option, the environment is surely more adverse and investment riskier now.
Second option, mutual fund should be trusted with protecting the value of underlying assets. Third option, it is now time to revive the market to junk securities. थर्ड है, फोर्थ है, it needs no further hate and no grateful lenders promoters. And fifth option, mutual fund quickly get into a handle and reach a settlement. Again एक बार statement समझते हैं. Whenever promoter groups reach an agreement with lenders, should not investors get to know the new terms of agreement between group and the mutual funds are since, क्योंकि since इसमें है क्या, because, क्योंकि dash under the changed scenario. कौन सी चीज चेंज होने लग गया, क्या चीज चेंज हो रहा है. फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लेते हैं, द एनवायरनमेंट इज श्योरली मोर एडवांस. क्यों हमें पता नहीं चलता है, एग्रीमेंट जो हो रहा है, एग्रीमेंट बिटवीन द ग्रुप एंड द म्यूचुअल फंड, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट में हमें पता क्यों नहीं चलता है. शुड नॉट इन्वेस्टर्स गेट इनटू नो बिकॉज द environment is surely more adverse. environment basically more adverse है and investment riskier now. और आज के दिन में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर है. तो ये रिस्क होने की वजह से जो लेंडर्स जो है शुड नॉट इन्वेस्टर्स गेट टू नो द न्यू टर्म ऑफ एग्रीमेंट. रिस्क इन्वेस्टमेंट की वजह से ही इनको पता नहीं चलता है इन्वेस्टर्स को क्या होगा. सो दैट्स वाई आवर आंसर विल बी ए. अच्छा, बी ऑप्शन पे देखो, शुड बी ट्रस्टेड. If it is trusted, तो then definitely should not go investors get into know, ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए, है ना. थर्ड ऑप्शन पे देखो, इट इज नाउ टाइम टू रिवाइव द मार्केट ऑफ जंक सिक्योरिटीज. डेफिनेटली दिस इज कंक्लूजन, इट इज नाउ द टाइम. सो पहले कुछ रीजन हुआ है, इसकी वजह से ये इफेक्ट है, तो हमें यहाँ पे कोई कॉज और इफेक्ट वाली बात नहीं है. इट नीड्स नो फर्दर, दिस इज ऑल्सो द कंक्लूजन. दिस बोथ आर स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन द कंक्लूजन. तो इसमें हमें कंक्लूजन नहीं देना है, इसमें हमें इसी देना है कि जो क्यों नहीं कर रहा है, रीजन देना है. सो दैट्स व्हाई आवर आंसर वाज ए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. A PCR will enable sharing of credit information mandated by law, fostering transparency and encouraging competition. Also, it dash credit information of the borrower will help lenders distinguish good ones from the bad. A PCR will enable sharing of credit information mandated by law, fostering transparency and encouraging competition. Also it. So देखो, will enable, अगर हमने स्टेटमेंट की फर्स्ट पोर्शन पे देखे, PCR will enable sharing of credit information mandated by law. So which will be enable? Here it is also it. So that's mean continuation of the word must be enable. So where is a words of enable, that is probably it will be our answer. C may be our answer, but we will not sure that because we have to look at all options also. तो a PCR will enable sharing of credit information mandated by law, fostering transparency and encouraging competition. Also it dash credit information of the borrower will help lenders distinguish good ones from the bad. I hope meaning क्लियर है. सो एनाबल शेयरिंग द क्रेडिट इंफॉर्मेशन मैंडेटेड बाय लॉ, जो शेयर करना पड़ेगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन को विच इज मैंडेटेड बाय लॉ. बाय लॉ के द्वारा ये बोला गया है कि जो हमें शेयर करना पड़ेगा, एनाबलिंग शेयरिंग. सो फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एनकरेजिंग कंपटीशन. साथ साथ कंपटीशन जो है इसमें है वो ट्रांसपेरेंसी, उसका कितनी ट्रांसपेरेंसी है और कितनी इनकरेजिंग है ये भी हमें दिखाना होगा. एंड ऑल्सो इट विल एनेबल एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी as the public availability of comprehensive credit information of the borrower which help lenders distinguish good ones from the bad. So ये सारी enability होना चाहिए. So that's why enable जो है that will be our answer. So C will be the correct option. Will enable efficient price discovery as the public availability of the comprehensive. अच्छा, इसमें डी पे देखो, will not only ensure higher disbursement of credit of MSME thereby, देखो thereby again not only but also thereby इसके साथ देखो thereby credit information borrower will lenders distinguish, मतलब इसलिए henceforth इस type of option information इसमें हमारे पास नहीं आएगा. So हमें just एक ही information देना है, वो सारी information को हमें and के साथ join किया गया. So that's why C will be the correct option. Let's move to question number 4.
Impatience is not something India had earlier been either stricken or associated with. Impatience is not something India had earlier been either stricken or associated with. It was in fact the world that started looking in India with growing impatience, but as the FM pointed out, the new impatient India in the creation of the dash and economic power growing at the healthy clip. अच्छा, impatience, I hope impatience का meaning तो सबको पता ही होगा. Impatience is not something India had earlier been either stricken or associated with. Impatience ऐसा कुछ नहीं जो earlier India में India earlier time पे इसके साथ strict होकर था हुआ था या इसके साथ associated था. ऐसा कुछ नहीं. In fact, the world that started looking in India with growing impatience, but as FM pointed out, the new impatient India's creation of the आज के दिन में जो इंडिया में जो impatience हुआ है ये किस चीज की क्रिएशन है, किसकी वजह से हुआ है क्रिएशन, क्यों हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन देखो, overwhelming economics before pools perhaps on which an economic power growing. देखो, overwhelming economics before pool, overwhelming economics before pool, perhaps on which an economic power growing at a healthy clip. No, क्योंकि overwhelming economics, overwhelming means क्या है, exaggerating, बहुत ज़्यादा. overwhelming economics before pool, perhaps on which an economic power growing, इसके साथ देखो मैच नहीं हो रहा है. सेकेंड ऑप्शन, resources ended up undelivered slogan. देखो, resources ended up undelivered slogan, megaphone, एक भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं हो रहा है. बिकॉज वी हैव टू पुट द रीजन वाई टुडे इंडिया इज इम्पेशेंस इज अ क्रिएशन ऑफ ग्लिप पेंटिंग ऑफ द प्रोवर्बियल प्रिटी पिक्चर्स की ऑप्शन इसमें है ही नहीं. डी ऑप्शन पे देखो, बोला है मूविंग क्लोजर टूवर्ड्स फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. नो. फिफ्थ ऑप्शन देखो, ऑप्टिमिज्म हैज कम विद एन द एस्पिरेशनल सोसाइटी ऑफ एन इकोनॉमिक पावर ग्रोइंग एट एन हेल्दी क्लिप. देखो, in this new impatience India is the creation of the optimism that has come. ये impatience India आज के दिन में बना क्यों? क्योंकि एक optimism जो आए है with a aspirational society. जब हमारी सोसाइटी में एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है किस चीज़ का, एंड इकोनॉमिक पावर ग्रोइंग एट अ हेल्थी क्लिप. जितनी जितनी हमारा हेल्दी हम होते रहे, इकोनॉमिकली हम जितनी हेल्दी होते रहे, उतना ही सोसाइटी में क्या बने, एस्पिरेशन बढ़ने लगा. और एस्पिरेशन जितना बढ़ने लगा, ऑप्टिमिज्म जो है वो भी हमारा ज़्यादा होने लगा. और जिसकी वजह से क्या हुआ, इम्पेशेंस इंडिया जो है वो बना. सो दैट्स वाई आवर आंसर विल बी ई. अगेन आई एम रिपीट टू टेल यू दैट्स द सेंटेंस. रिपीटेडली पढ़ो, इसको मीनिंग समझ लो, तभी इसके साथ करना, अदरवाइज रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. फिर भी वर्ड टू वर्ड यू कैन मैच दैट. पेंटिंग, प्रोवर्बियल, प्रेटी पिक्चर्स, समथिंग, देयर इज अ नो इन्फॉर्मेशन ऑफ पेंटिंग, नो इन्फॉर्मेशन ऑफ पिक्चर. रिसोर्स, नो इन्फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स. स्लोगन, मेगाफोन, नो. सो दैट्स वाई यू कैन मैच द ऑप्शंस विद द स्टेटमेंट. Let's move to question number 5. The RBI pointed on the absence of systematic default to avoid giving them the leniency, while the finance ministry was focused on how NBFC stretched funding was affecting the much needed credit supply. Both viewpoints were justifiable, but no one was dash or potential moral hazard problem. Acha, what's the meaning of that line? The RBI pointed to the absence of systematic default to avoid giving them leniency, while the finance ministry was focused on how NBFC stretched funding was affecting much needed credit supply. Both viewpoint was justifiable, but no one was. देखो, सारी पॉइंट जो है, देखो अगेन अगर आप इसको एक बार डिस्कस करें, the RBI pointed to the absence of systematic default
to avoid giving them leniency while the finance ministry was focused on how NBFC stretched funding was affecting the much needed credit supply. Both viewpoints were justifiable, but no one. So both viewpoints were justifiable, but no one was dash or potential moral hazards problem. So both viewpoint was, दोनों viewpoint जो है justifiable, but no one was, कोई भी क्या नहीं किया. अगर हमने बोले ensuring that gross non-performing asset, here there will be no any information of NPS, non-performing assets की कोई बात इसमें हुआ नहीं ना, so that's why this will be not the option. B option, assessing the situation from the perspective of liquidity bailout. Both viewpoints were justifiable, but no one was assessing the situation from perspective of a liquidity bailout. Third option पे क्या है? Prescribed corporate action to prevent repetition of loan. Again देखो इसमें loan की कोई बात इसमें नहीं हुआ क्योंकि NBFC stretched funding was affecting the much needed credit supply. This is the credit supply. So but no one dash. So loans की कोई option इसमें है नहीं. Debating the correctness of the bailout and addressing the need of NBFC's constrained liquidity. So best two options कौन सी हो सकता है? एक तो हम B को लेकर सोच सकते हैं, एक हम E को लेकर सोच सकते हैं. So which can be the finalized? Which can be the final answer? So अगर हम ऐसे बोले, the RBI appointed to the absence of systematic default to avoid giving them leniency, while the finance ministry was focused on how NBFC's stretched funding, ठीक है, was affecting the much needed credit supply. I hope meaning समझ में आ गया. Both viewpoints were justifiable, but no one was, दोनों justifiable है, but no one was assessing the situation from the perspective of the liquidity bailout or potential moral hazards problem. देखा? So that's when it is clear to us. आंसर हमारा होगा क्या? B. Word to word meaning समझने की कोशिश जरूर करना, तभी सेंटेंस होगा. Question number 6 पे चलो. The government should vest bank ownership in the holding company whose board should appoint boards of individual banks, and the holding company can dash that shield banks from the politicians and bureaucrats who meddle with decision making. Okay. समझते हैं पहले मीनिंग इसका. The government should vest bank ownership in a holding company whose board should appoint board of individual banks, and holding company can, जो holding company है, जो होल्डिंग कंपनी कैन क्या कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है जो हमें ऑप्शन देना होगा, जिस ऑप्शन पे आएगा. इसमें देखो, लेवरेज इट्स कैपिटल टू इंजेक्ट कैपिटल इन बैंक्स. अगर कोई गवर्नमेंट, जो इसमें बोला है, शुड वेस्ट बैंक ओनरशिप इन अ होल्डिंग कंपनी हुज बोर्ड शुड अपॉइंट बोर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स एंड होल्डिंग कंपनी कैन. ओके, सो होल्डिंग कंपनी को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कैन दैट शील्ड बैंक्स फ्रॉम द पॉलिटिशियन, जो बैंक को बाकी पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट से शील्ड कर सकता है, हु मेडल विद डिसीजन मेकिंग. सो इसमें देखो, फर्स्ट ऑप्शन है कि लिवरेज इट्स कैपिटल टू इंजेक्ट कैपिटल इन बैंक. सेकंड ऑप्शन तो आएगा ही नहीं क्योंकि कैन के बाद ऑफर्स दिया हुआ है, ये दो ऑप्शन को पहले ही कट करना है. अच्छा, थर्ड ऑप्शन, कैन टर्न टू असॉर्टेड non-banking finance companies and informal lenders for their needs. अगर ये assorted non-banking finance है, there is no information of non-banking because there is a vast bank ownership. So non-banking वाली ऑप्शन तो हमें पहले ही कट करना है. नेक्स्ट है कि need to hire more people equal to, इसमें IT की बात नहीं हो रहा है, कोई भी skilled IT की बात इसमें नहीं हो रहा है. And come calling on them even when they are known malfeasance. So ये आंसर भी देखो इसके साथ नहीं होगा. Can come calling on them, who are them? Who are they? आंसर है नहीं हमारे पास, who are they? So that's why it is clear to us. जो आंसर होगा first. Leverage its capital to inject capital in banks that shield banks from politicians and bureaucrats who meddle with decision making. Question number 7.
Digital transformation does not mean embedding deep tech as a panacea for poorly designed process. For example, machine learning requires a high quality of data. Poor quality of input data is a major hurdle to the accuracy of the outcome machines can. It's a very simple. I hope ये कर लोगे. Machine can, machine कर सकते हैं. क्या चीज ये देखना है. Machine can help them achieve digital transformation at a fraction of the cost. Machine can remember. Machine can predict the best course. Machine can look at the customer engagement. Machine can embody customers' engagement through the hyper-personalized experience across multiple channels. So which can be the correct option? Machine can, अगर first option देखते हैं, machines can help them achieve digital transformation. क्या machine ही क्या help करेगा to achieve digital transformation? Digital transformation के लिए क्या only at a fraction of cost में machine help कर सकता है? Second option देखो, machine can remember the chain of touch points across the multiple platforms. जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, ये मशीन क्या कर सकता है, रिमेम्बर करके रख सकता है. थर्ड ऑप्शन पे दिया है क्या, machines can predict the best course but ultimately humans will be the responsible for the timely action. I hope it is clear to you. मशीन चाहे कुछ भी करे, अल्टीमेटली मशीन को कंट्रोल किसको करना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग को ही करना पड़ेगा. सो मशीन कैन प्रेडिक्ट द बेस्ट कोर्स, मशीन तो बेस्ट प्रेडिक्ट तो कर ही देगा बेस्ट को, बट अल्टीमेटली ह्यूमन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एक्शन. मशीन कैसा काम कर रहा है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ह्यूमन बीइंग रहेगा. इसलिए आंसर हमारा इसका होगा सी. सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहे जितने भी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों ना हो, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ह्यूमन बीइंग का ही है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. India gets about 300 clear sunny day annually when fields need irrigation mostly, and we do need to leverage our enviable natural resource of endowment of the gainfully step up clean power and systematically dash on stemming carbon emissions to arrest global warming and tackle climate changes. Okay, so India gets about 300 clear. So इसमें हमें ऑप्शंस कैसे चाहिए, देखो, इंडिया गेट्स अबाउट 300 क्लियर सनी डे एनुअली. आई होप मीनिंग क्लियर. 300 क्लियर सनी डे इंडिया को मिलते हैं. व्हेन फील्ड्स नीड इरिगेशन, जिस टाइम फील्ड को इरिगेशन की जरूरत है मोस्टली, एंड वी डू नीड और लिवरेज आवर एनविएबल नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट और गेनफुली स्टेप अप क्लीन पावर एंड सिस्टमेटिकली. सो दैट्स मीन एंडोमेंट टू गेनफुली step up clean power and systematically dash on stemming carbon emission to arrest global warming and tackle climate change. Stemming carbon emissions to arrest global warming and tackle climate changes. So, first option come in the way quality power supply and generally stultify growth. देखो, इसमें पावर सप्लाई की बात इसमें नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बोला है कि leverage our enviable natural resource and endowment of gainfully step up clean power and systematically. Already it is mentioned, जो step up clean power and systematically. So second option पे power हमें देने की जरूरत नहीं है. बी पे दिया है कि raise our lowly energy consumption level even as we remain focused. Raise our lowly energy consumption level. So gainfully step up clean power and systematically raise our lowly energy consumption level even as we remain focused. Third option, put paid to run away revenue leakage on power distribution. पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लीकेज की बात हम इसमें नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी गेनफुली स्टेप अप है. डी ऑप्शन, make them the standard one units with that the position to sell. ये तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं चाहिए because this is completely irrelevant. And boosts renewable power generation and farm incomes, ये हो सकता है. बट अगर ये हम कर भी देते हैं, देखो, boost renewable power generation and farm incomes on stemming carbon. देखो, farm का income
किस चीज के ऊपर होगा? और स्टीमिंग कार्बन एमिशन टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग अरेस्ट करने के लिए क्या फर्म का इनकम चाहिए? सो देखो मैच तो हो नहीं रहा है ना ये दोनों इन्फॉर्मेशन पे। सो दैट्स व्हाई इट इज क्लियर टू अस आवर आंसर विल बी बी। सो एक बार पढ़ते हैं, देखो इंडिया गेट्स अबाउट 300 क्लियर सनी डे एनुअली व्हेन field need irrigation mostly, and we do need the leverage our enviable natural resource endowment to gainfully step up clean power and systematically raise our lowly energy consumption level। जो इसको हमने सिस्टमेटिकली जो हमारे पास लोली एनर्जी कंजम्पशन लेवल है उसको सिस्टमेटिकली अपवर्ड करना है, इवन एज वी रिमेन फोकस्ड ऑन स्टिमिंग कार्बन एमिशंस टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड टैकल climate changes. So that's why our answer will be B. Question number 9. SEBI did approve a framework of foreign portfolio investors to trade in the commodity and a derivative, and it would dash, but there remain onerous capital control, rigid position, limited ad hoc margin requirement, questionable tax policies, and that comes the vibrant domestic market of the commodity derivatives. सेबी अप्रूव किया था अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के फ्रेमवर्क बनाया था टू ट्रेड इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, किस लिए ना कमोडिटी डेरिवेटिव्स करने के लिए, एंड इट वुड डैश बट देयर रिमेन ऑनरस कैपिटल कंट्रोल, लेकिन वहीं पे चाहिए था क्या ना एक कैपिटल कंट्रोल चाहिए था, रिजिड पोजीशन लिमिट चाहिए था, एडहॉक मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए था, एंड क्वेश्चनेबल टैक्स पॉलिसी दैट कम इन द वे ऑफ वाइब्रेंट डोमेस्टिक मार्केट फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ये चीज़ अप्रूवेशन में चाहिए था। लेकिन इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या, स्ट्रेंथेंड इन्वेस्टर्स कंफर्ट ऑफ द डिलीवरी अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। Second option, declare commodity derivatives trading as non-speculative, allow set off the gains. Third option, B, to do the CTT together. Fourth option, provide inward access for the foreign participation on the onshore markets. And E option, shoring up institutional participation and the raise liquidity in futures and options. देखो आई होप ये समझ में आ गया होगा जो कौन सी ऑप्शन हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बोला है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड इट वुड क्या करना होगा, वुड प्रोवाइड इनवर्ड एक्सेस, और ये करेगा क्या, इनवर्ड एक्सेस को प्रोवाइड करेगा, एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इन ऑनशोर मार्केट, क्योंकि इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात हो रहा है। तो दैट्स वाई फॉरेन पार्टिसिपेशन की बात इसमें हो रहा है, तो इसलिए हमें फॉरेन पार्टिसिपेशन की बात देना होगा। सो आवर आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 10. Data show that the focus of banks has shifted to generating accounts and credit expansion through lower credit limit accounts, and it could also be many of these accounts were created after demonetization. However, the noteworthy point of this credit outstanding dash large ticket account. Data show that focus of the bank has shifted generating accounts and the credit expansion through lower credit limit accounts, and it could also be the many of these accounts were created by demonetization. However, the noteworthy point is that the credit outstanding करने के लिए large ticket account. Okay, first option देखो has increased. पहली बात तो है जहाँ पे have वाली ऑप्शन है उसको तो हम पहले ही कट कर देंगे, क्योंकि the noteworthy point is that the credit outstanding, credit is a singular number, so that's why have ये कट जाएगा, had ये भी कट जाएगा because it's not the past tense, and also your conscious decisions by banking hindered by, ये भी हमें नहीं चाहिए। सो आइदर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। सी का देखो हैज बीन नेगेटिव इन द लोअर क्रेडिट लिमिट। नेगेटिव इन द लोअर क्रेडिट लिमिट तो हमें बोला नहीं, क्योंकि हमें बोला है कि क्रेडिट एक्सपेंशन थ्रू द लोअर क्रेडिट ऑलरेडी मेंशन्ड है, सो हैज बीन नेगेटिव इन लोअर क्रेडिट लिमिट अकाउंट्स नहीं चाहिए। अब ए ऑप्शन पे देखो हैज इंक्रीज्ड फास्टर इन दीज लोअर क्रेडिट लिमिट अकाउंट्स द सेक्टर्स कंपेयर्ड टू, सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी ए। So these are the 10 questions. These are 10 questions of phrase replacement.
This is little bit of tough in that sense. Here the uses of grammar is very little, very less, but understanding ability is very tough. It's my wise advice. You have to run through these 10 sentences again and again and try to understand the meaning, and then try to understand the options also, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. ये पेपर में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और ये चीज़ों के लिए आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्या बैंकिंग टर्म्स को जानना, थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म्स को जानना, इकोनॉमिकल टर्म्स को जानना, ये बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ ना हम और भी आगे सेशन में मैं और भी ये चीज़ करवाऊँगी. तो ये आप लोग एक तो पॉइंट करके नोट कर सकते हो. At first you have to note it down and then repeatedly इसको पढ़ो. सेंटेंस को 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद इसके मीनिंग को समझो, समझने के बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स करो, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते ही है. और 5 मार्क्स के लिए वी कैन डेफिनेटली स्पेंड 5 to 10 minutes. सो पढ़ के देखो एक बार. जहाँ पे समझ नहीं आएगा, इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड दैट, यू राइट मी इन मैसेज and write me in comment box. I will definitely give your answer. But इसको करते रहो and keep up your practice, please. Then you will be the achiever. Thank you. Have a nice day.